I apologize for the lack of sound in the video, and maybe we can try it again. Your Highness, Excellencies, इस स्पेशल इवेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बैठे तो अच्छा रहेगा। पीछे लोग जो हैं उनको आपकी सेल्फी बाद में हो जाएगी। मेरे ब्रदर और यूएई के राष्ट्रपति हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। इतनी व्यस्तता के बीच भी उनका यहां आना, हमारे साथ कुछ पल बिताना और उनका समर्थन मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यूएई के साथ इस इवेंट को को-होस्ट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन का इस इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, मैंने हमेशा महसूस किया है कि कार्बन क्रेडिट का दायरा बहुत ही सीमित है और ये फिलॉसफी एक प्रकार से कॉमर्शियल एलिमेंट से प्रभावित है। मैंने कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भाव होना चाहिए उसका बहुत अभाव देखा है। हमें होलिस्टिक तरीके से नई फिलॉसफी पर बल देना होगा
और यही ग्रीन क्रेडिट का आधार है। मानव जीवन में आमतौर पर 3 प्रकार के चीजों का हम अनुभव करते हैं। हमारे स्वाभाविक जीवन में भी जो लोगों को हम देखते हैं तो 3 चीजें हमारे नेचर सामने आती हैं। एक प्रकृति यानी टेंडेंसी, दूसरी विकृति और तीसरी संस्कृति। एक प्रकृति है, एक नेचुरल टेंडेंसी है जो कहती है कि मैं पर्यावरण का नुकसान नहीं करूंगा। ये उसकी टेंडेंसी है। एक विकृति है, एक डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है जिसकी ये सोच होती है कि दुनिया का कुछ भी हो जाए, भावी पीढ़ी का कुछ भी हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, मेरा फायदा हो। यानी एक विकृत मानसिकता है। और एक संस्कृति है, एक कल्चर है, संस्कार है जो पर्यावरण की समृद्धि में अपनी समृद्धि देखता है। उसको लगता है कि मैं पृथ्वी का भला करूंगा तो मेरा भी भला होगा। हम विकृति को त्याग कर पर्यावरण की समृद्धि में अपनी समृद्धि की संस्कृति विकसित करेंगे, तभी प्रकृति यानी पर्यावरण की रक्षा हो पाएगी। जिस तरह हम अपने जीवन में हेल्थ के कार्ड को अहमियत देते हैं कि भाई आपका हेल्थ कार्ड क्या है, आपका हेल्थ रिपोर्ट क्या है, रेगुलर उसको हम देखते हैं, हम कॉन्शियस है, ये कोशिश करते हैं कि उसमें पॉजिटिव पॉइंट जुड़े हैं। वैसे ही हम पर्यावरण के संदर्भ में भी सोचना शुरू करना चाहिए। हमें देखना होगा कि क्या करने से पृथ्वी की हेल्थ कार्ड में पॉजिटिव पॉइंट जुड़े, और यही मेरे हिसाब से ग्रीन क्रेडिट है, और वही मेरी ग्रीन क्रेडिट की अवधारणा है। हमें नीतियों में, निर्णयों में यह सोचना होगा कि उससे पृथ्वी के हेल्थ कार्ड में ग्रीन क्रेडिट कैसे जुड़ेगा। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, डिग्रेडेड वेस्टलैंड का है। अगर हम ग्रीन क्रेडिट के कंसेप्ट से चलेंगे तो पहले डिग्रेडेड वेस्टलैंड के इन्वेंटरी बनाई जाएगी, फिर उस भूमि का उपयोग कोई भी व्यक्ति या संस्था वॉलेंटरी प्लांटेशन के लिए करेगी, और फिर इस पॉजिटिव एक्शन के लिए उस व्यक्ति या संस्था को ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे। ये ग्रीन क्रेडिट फ्यूचर एक्सपेंशन में मददगार होंगे और ये ट्रेडेबल भी हो सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, चाहे वह रजिस्ट्रेशन हो, प्लांटेशन हो, वेरिफिकेशन हो या फिर ग्रीन क्रेडिट जारी करने की बात हो। और ये तो सिर्फ मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया है। हमें मिलकर ऐसे अनंत आइडियाज पर काम करना होगा। इसलिए ही आज हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर रहे हैं। ये पोर्टल प्लांटेशन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आइडियाज, एक्सपीरियंसेस एंड इनोवेशंस को एक जगह पर कलेक्ट करेगा, और ये नॉलेज, ये रिपोजिटरी वैश्विक लेवल पर पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस और ग्रीन क्रेडिट्स की ग्लोबल डिमांड को शेप करने में मदद देगी। फ्रेंड्स,
हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रकृति रक्षति रक्षिताः, अर्थात प्रकृति उसकी रक्षा करती है जो प्रकृति की रक्षा करता है। इस मंच से मैं आह्वान करता हूं कि इस इनिशिएटिव से जुड़े, साथ मिलकर इस धरती के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए एक ग्रीनर, क्लीनर और बेटर फ्यूचर का निर्माण करें। मैं मोजाम्बिक के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूं कि वह समय निकालकर हमारे बीच आए हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार फिर आज इस फोरम में जुड़ने के लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Thank you, Honorable Prime Minister Ji, for your inspiring and very motivating works. We resolve to work hard to take your initiative ahead in the coming days. I take this opportunity also to welcome the President of Mozambique, His Excellency, Mr. Filipe Nyusi. I now invite His Excellency, Ulf Kristersson, Prime Minister of Sweden, to deliver his remarks. Thank you so much, Excellencies, ladies and gentlemen, distinguished colleagues. We would like to thank our hosts and dear colleagues of India for this invitation to this event on enhancing climate action. Indeed, there are a large number of organizations, corporate entities and individuals who want to contribute to securing our future environment in light of both the urgency and the opportunities of climate transition in our societies. We see the Green Credit Initiative as a promising additional tool to enhance climate action. The Green Credit Initiative could lower the thresholds and show how both companies, authorities and people can take concrete action. Through the Swedish initiative, the Climate Leap, we know that supporting action really can make a big difference. Since 2015, this Climate Leap, we have financed over 5,000 collected actions for climate mitigation. Together, these actions have reduced the climate emissions with 3.3 million tons per year. The cost is less than $35 per ton. The largest reduction in emissions as a result of the Climate Leap are expected within transportation, waste management and biogas production, similar to the focus areas of the Green Credit Initiative. So we welcome this dialogue by India to promote global partnerships, cooperation and engagement through exchange of knowledge, experiences and best practice. We already share experiences of fruitful collaboration through Lead It, and we are looking forward to enhancing climate action together with others who also realize both urgency and possibility. We look forward to take more climate action together. Thank you so much. Thank you, Excellency, for your incisive and very encouraging words. I now invite His Excellency, Mr. Filipe Nyusi, to deliver his remarks. Thank you. Sorry, my dear friend and brother, Modi. You know, I'm from Gujarat. Namaste. His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of India,
Excellencies, heads of state and government, ladies and gentlemen, I thank both President Sheikh Nayan and the Prime Minister Modi for inviting Mozambique to this higher-level event on Green Credit Initiative. Mozambique is very committed to protect forest ecosystem because of the benefits to humankind. In Mozambique, forest ecosystem play a critical role for the life of our people because many of our people live in rural areas and depend on forest natural resources. Your Green Credit Initiative is aligned with Mozambique initiative of sustainable management of the Miombo Forest. The Miombo Forest Initiative was formally endorsed by the Maputo Declaration last year, together signed by 11 countries in SADC region, namely Mozambique, Angola, Botswana, DRC, Congo, Malawi, Namibia, South Africa, Tanzania, Zambia, and Zimbabwe. The Miombo is the largest tropical forest ecosystem, and it is home of more than 300 million population. We are here to support this Green Credit Initiative and also to ask you to accept Mozambique initiative on the Miombo Forest as part of this large initiative by India and United Arab Emirates. In partnership with the International Conservation Foundation, ICCF, Mozambique will host an international conference on the Miombo Forest next year in April in Washington, D.C., to mobilize funding and international collaboration. I would like to invite Prime Minister Modi, President Nayan, and all dignitaries to join us in that conference. I would like also to ask that Miombo Forest Initiative be included on the Global Green Credit web platform that is going to be launched here in this forum. Thank you for your attention. Thank you, Your Excellency, for your very insightful comments. I now invite His Excellency Charles Michel, President of the European Council, to deliver his remarks. My dear Prime Minister Modi, dear President, Prime Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, it's a great pleasure, it's an honor to be today with you, and I would like to commend, dear Prime Minister Modi, your personal role in chairing the G20. The G20 is an important multilateral body. We were together in your beautiful country a few months ago, and you have seen how with your leadership it is possible to make progress in the right direction. You know that the European Union made a very important choice about 4 years ago when we decided to make Europe the first neutral continent by 2050. This is a very ambitious goal, but we made this decision because we are absolutely convinced that it is our responsibility to prepare the future, it's our responsibility to address climate change, it's our responsibility to mobilize all our efforts to make sure that we will protect the humanity. And on that point, I know that we are all of us exactly on the same page. That's why it's good to join you today to discuss this important topic of green credits, because strong climate action requires strong climate financing. And this financing will not come from one source alone. We must find new and innovative ways to mobilize more financing and to find more sources of income. And that's why I want to be very clear, we welcome this innovative initiative of our partners, because green credits are a great idea to incentivize environmental efforts. But in our opinion, we should also keep 3 key principles in mind to ensure they have a positive impact on climate action. The first one is the system should be robust with a high degree of integrity and transparency. Second, green credits must lead to emission reduction. And third, they cannot be cheap offset schemes that hurt the environment in the long run.
and you can count on the EU to support developing countries working to decarbonize their societies. We want to be a reliable and credible global partner. Finally, ladies and gentlemen, I would like to add that the European Union is fulfilling its commitment regarding the 100 billion euros needed for the developed countries. This is a promise we made many years ago, and we are fulfilling on the EU side this very important promise. Second point, loss and damage. You remember that the EU was one of the first countries supporting this idea when it was put on the table. And third point, I would like to use this opportunity because I'm absolutely convinced that we have a problem, ladies and gentlemen, with the Bretton Woods institutions, World Bank and IMF, because those institutions are not prepared for the new world, for the new challenges we face, and that's why the EU is committed to working with all of you to reform those institutions. And I see two important challenges. The first one is to make sure that those institutions have the financial means they need to help and to support the developing countries, so that developing countries do not have the responsibility to choose being fighting poverty on the one hand and going green on the other hand. Point one, it should be a priority for all of us. For instance, you know that in comparison with 70 years ago, the World Bank is 7 times less capitalized. It is showing something about what we need to do in the future. And finally, those institutions should be much more inclusive. They do not reflect the reality of the world we live in. Again, we can count on the EU. We believe in the multilateral approach because this is the European DNA. We believe in working together to address common challenges in a respectful way. Thank you, Prime Minister Modi, for bringing us together today. You can count on the European Union. Thank you for your leadership. Thank you, Excellency, for your very enthusiastic support and your decisive remarks. A web platform has also been created to promote global partnerships, cooperation and engagement through the exchange of knowledge, experiences and best practices in policy, planning and implementation of environment-positive actions through programs and mechanisms like green credits. This web platform will serve as a repository of policies and best practices that incentivize environmentally friendly actions and that will catalyze the exchange of knowledge and experiences related to policies, programs and practices that promote afforestation activities. I would now like to request the Honourable Prime Minister of India to launch the web portal. What happened? Change it to the... Yeah. Thank you all the esteemed dignitaries and excellencies for your participation in launching the portal. Honorable Prime Minister, Your Highness, Your Excellencies, thank you very much for gracing this occasion. We now conclude this event. Thank you so much. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अगर छोले बने तो गोल्डी
छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया है तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद तो आपने सुना थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी दुबई में ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव समिट को संबोधित कर रहे थे और इससे पहले ग्रीन क्रेडिट के जो पहला सत्र हुआ उसको भी पीएम मोदी ने संबोधन दिया और कार्बन क्रेडिट का जो दायरा सीमित करने की बात प्रधानमंत्री ने उद्घाटन सत्र में कही थी, वही बात उन्होंने बाद में भी कही। जब वो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमें अपने हेल्थ कार्ड का ख्याल रखते हैं, ऐसे हमें अपने पर्यावरण का भी ख्याल रखना चाहिए। और सामाजिक उत्तरदायित्व का जो अभाव है उसको लेकर जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमारा एक सामाजिक उत्तरदायित्व है पर्यावरण के प्रति भी। इसके पहले सत्र में पीएम का संबोधन भी हुआ। कार्बन क्रेडिट का दायरा सीमित करने के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व का जो अभाव है इसकी तरफ प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलवाया और कहा कि पर्यावरण की समृद्धि में अपनी समृद्धि संस्कृति विकसित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीतियों और निर्णयों के जरिए पृथ्वी के हेल्थ कार्ड में ग्रीन क्रेडिट को जोड़ने की प्रकृति की जरूरत है। पीएम ने यह भी कहा कि प्रकृति उसकी रक्षा करती है जो उसकी रक्षा करता है। अपने हेल्थ कार्ड की तरह ही प्रकृति के हेल्थ कार्ड के बारे में भी सोचने की जरूरत है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 सम्मेलन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं आगमन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी पीएम का अभिनंदन किया।